Facebook. So good evening everyone. I am Aarati Savur, CEO of Parisar Asha, and I welcome all of you in today's fresh new series of Ask the Expert Season 3. So आप लोगों को मैं बताऊं कि परिसर आशा इज मुंबई बेस्ड एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट 40 सालों से. So we work with the school for improving quality of education, and we also have positive parenting and child helpline, which is absolutely free of cost service with the great support of Capgemini. So we started this Ask the Expert series during COVID times because तभी सब लोगों की जो मानसिक स्थिति थी बहुत तनाव में थी. तो इसके लिए we started and we really got so much of feedback and encouragement from all of you that we had to continue this. So today we are back again with the fresh new series of Ask the Expert, and we thought today's topic, let's start with the screen stress, because we are all today, from past 1.5 years, we are glued to our screens, whether it is laptop, computers, or your mobile phones. So earlier, maybe our mobile or screen time used to be 2 to 3 hours per day, but today it has extended to 18, 20, 24 hours also. So it is very, very difficult, I think half of our stress is due to today technology and the screen, and especially it is affecting our eyes. जो हमारी आंखें हैं वो आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक है. तो हमने सोचा क्यों ना आज के सेशन में हम ऐसे किसी को इनवाइट करें जो हमें टिप्स बताएंगे, जो हमें अपने आंखों का ख्याल रखना सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जुड़ा है हमारे मानसिक तनाव के साथ भी. तो इसके लिए टुडे आई एम वेलकमिंग डॉक्टर, वेरी यंग एंड डायनामिक डॉक्टर. ही इज एन आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन. So welcome Dr. Sohail Kothare. So let me give a small brief about Dr. Sohail Kothare. So we share the same BNI platform where I came to know about him and his wonderful work. So Dr. Sohail Kothare is a chief ophthalmologist and eye surgeon at Canopus Eye Centre since 2017. He is specialist in laser cataract and refractive surgeries, and he has been also involved in a lot of charity work. So welcome Dr. Sohail Kothare, and we are really looking forward to an eye-opening session for taking care of your eyes. Yeah. Thank you, Ms. Aarati Savur. Yeah. So let me straight away start with our questions. In fact, I was going to ask you that question before I was reading out this paper, because I do have the specs, जैसे उम्र के साथ सबको ही चश्मा लग जाता है, वैसे मुझे भी लग गया है, but I hardly use it. So is it necessary that I have to keep on using while reading, or चल जाएगा without, because I can read without, even specs. So, but is it going to really, affect my eyes if I'm not using my specs? Yes, thank you, Ms. Aarati, for giving me this. Firstly, I would like to thank you and Parisar Asha for giving me this platform. और इस मंच पे presentation देने के लिए I'm highly privileged. Thank you so much. So yeah, so coming to the first question that you have asked, so it's something very commonly I examine in all my patients. सभी patients में देखने को मिलता है, and especially after say 40 years of age, जो नजदीक का नंबर आता है लोगों में, और the reading glasses as we commonly call it, किंवा मराठीमध्ये 40चा चष्मा जो आपण म्हणतो. So that is due to an inherent weakness or weakening in the eye muscles which occurs with age, and due to which anything that we try to read at a very close distance is not very clear. तो आंखों की जो फोकसिंग मैकेनिज्म रहती है नजदीक के काम के लिए, वो धीरे धीरे उम्र के साथ at around 40 years of age कम हो जाती है. तो उसके लिए हमें विजुअल एड्स या चश्मे की यूज करने की जरूरत पड़ती है. एंड इन सच सिचुएशंस क्या होता है कि इफ वी डू नॉट यूज द ग्लासेस, we have to either strain too much or we have to make certain adjustments in the viewing distance. हमें हमारा जो मटेरियल है काम करने के लिए या पढ़ने का, वो बहुत ज़्यादा दूर लेना पड़ता है नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस से. तो अगर हम एक अंदाजे पकड़े कि अराउंड 20 to 40 सेंटीमीटर्स इज अ नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस, या अराउंड 14 इंचेस, बट हमें बहुत बार 40-45 ईयर्स के बाद वो रीडिंग मटेरियल बहुत दूर लेके ही देखना पड़ता है. और इसके साथ एक तो क्लैरिटी भी अच्छी नहीं रहती, इट्स नॉट ऑप्टिमल क्वालिटी, एंड सेकेंडली द स्ट्रेन इज देयर ऑन द आईज. सो इफ देयर इज कंटिन्यूड स्ट्रेन, यू रीड फॉर जस्ट 2 to 5 minutes, यू माइट नॉट फील द डिफरेंस. लेकिन बहुत ज्यादा 15-20 मिनट्स काम करने पे कभी कभी आंख पे स्ट्रेन पड़ता है,
So in such cases, using glasses or reading glasses is definitely helpful. और ऐसे केसेस में कभी कभी कंप्यूटर के लिए भी अलग चश्मा यूज करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज रीडिंग द नंबर इज लिटिल डिफरेंट, बिकॉज इट इज हेल्ड एट अ मच क्लोजर डिस्टेंस देन द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के लिए भी अलग कभी कभी डिस्टेंस चश्मा यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज इट इज अ फादर डिस्टेंस देन what you hold in your hand, like a mobile or any book or any newspaper. So we have to make computerized customized glasses for computer use specifically, और reading के लिए भी अलग सा number लग जाता है. So all this is age related, which is expected after 40 years of age universally, irrespective of the situation. Okay, okay. So great. So मेरे जैसे बहुत से पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो अभी क्या सिनारियो है, like what kind of cases you are getting, what is the scene of the screen stress, especially because post pandemic our life has completely changed, like during this pandemic time, and Absolutely. everything is online, and हमें तो without screen we cannot live today. तो हमें चश्मा तो पहनना ही है, स्पेक्स तो पहननी है, बिकॉज आई थिंक दैट ग्लेयर इज आल्सो वेरी हार्मफुल जो स्क्रीन से आता है. तो आपको अभी कैसे टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? Yeah, so let me start off जो पैंडेमिक के पहले का सिचुएशन था. So say around 50 पेशेंट्स में से 15-20 पेशेंट्स जिनको एक्चुअली ऑफिस में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत पड़ती थी, say around 8 to 10 hours per day, वो ज्यादा पेशेंट्स आते थे. These were the IT professionals, these were corporate people who were working in IT companies, even those people who are in schools, who are on a desk job, or in the offices those who are having a desk job. So उनके केसेस ज्यादा रहते थे for eye checkup और eye related strain, computer related strain. अभी कैसे हो गया है कि because of the pandemic, ever since the lockdown, many people have been restricted to their homes, right from children, छोटे बच्चों से लेके those who have not had the chance to go to school, they have had their entire schooling online. So they have their entire educational course for whatever, for 4 to 6 hours daily online only. Then we come to even the office goers. तो office goers को भी ऐसे हो गया है कि बहुत सारे लोगों को work from home करना पड़ा. तो work from home के situation में time restriction was not there at all. So जो 8 और 10-10 घंटा काम करने वाले थे लोग, they have been using screens for 12 to 16 hours. There are people who come to me saying ki we just sleep and the rest of the time we are just on our screen. So this increased screen time has also had a lot of effect on the office going young population, middle aged population. And even if you go to see the old age, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो normally थोड़ा बहुत बाहर टहलने के लिए निकलते थे, they used to move around, socialize a lot. They haven't been able to do it for the past 1.5 years, and being stuck at home, they have been entertaining themselves on mobiles or on TV screens or on the laptops. तो अगर देखा जाए तो along the entire range of people, right from childhood to old age, everybody has been affected. So there has been an increase in even children, especially coming in with eye strain issues. क्योंकि बच्चों में कैसे है कि वो बहुत बार छोटे बच्चे बता नहीं पाते कि उनको दिखने का प्रॉब्लम है. They will only complain of certain eye strain or headache, या आंख में से पानी आना, आंख लाल होना. These are the features that they present with. They sometimes cannot really complain because of certain issues that they feel. They feel very scared कि अरे अगर मम्मी पापा को ऐसे बताया कि दिख नहीं रहा है तो वो डांटेंगे. So these issues are there, due to which they delay the presentation, and they come to us only when the problem is very severe, or when the parents themselves notice something different कि बच्चा थोड़ा टीवी स्क्रीन के बहुत नजदीक जाके देख रहा है. When the child is seeing something, there's a lot of redness and watering from the eyes. आंख बहुत रब कर रहा है बच्चा. तो these are certain telltale signs जो parents पकड़ते हैं, and then they bring the child to the screening, and that is the time when we notice कि बच्चे को थोड़ा नंबर है. So these situations have very much increased, and because screen time, if it is not our computer, it is our phone. If it is not our phone, it is somebody else's phone. So everywhere the screen mania is there, and it never ends completely.
And after one point of time, as you have said, कि we cannot do without it. हम screen के बिना या हमारे laptop या mobile के बिना काम नहीं कर सकते. So we have to find solutions wherein there is no way out, but we have to deal with it head on. So it is whether it is for business or for our work or for communication, entertainment, ये सब चीजें बहुत ज़्यादा महत्व हो गई है. इनका महत्व अभी बढ़ गया है. So it is important to get the eyes checked in such situations, and definitely, as you asked, apart from so around pre-pandemic we used to see 20 patients out of 50 who were having computer vision related or screen time related issues. Now it's almost 40 out of 50 patients, so it's almost doubled, who come with some form of screen related or computer related strain related issues. So definitely it's been a paradigm shift over the last 1.5 years. Very dangerous situation then, I can say. Yeah. So basically, what we call as computer vision syndrome. तो ये टर्मिनोलॉजी जो है हमारे सिचुएशन में बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि किसी भी स्क्रीन के वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, these do not damage the eye permanently. Okay. Be rest assured, these do not damage the eye permanently. But बहुत ज़्यादा prolonged screen time किसी का बहुत टाइम के लिए रहेगा, so they cause certain unpleasant side effects. So basically, if you go to see, it's almost 2/3 to 60% to 70% of office goers have these problems. So what they can complain of? They can complain of eye strain, कि आँख के पीछे थोड़ा तनाव आ रहा है, आँख में भारी लग रहा है, आँख खिंची सी लग रही है. They could complain of dry eyes क्योंकि बहुत बार मेरी बेटी भी कंप्लेन करती है कि eyes बहुत dry हो रहे हैं. तो is it because of screen time only? Absolutely. See, screen time is one of the main factors. It could be a lot of environmental factors. बहुत सारी conditions जिसमें हम हमारा जो working area है, जो वहाँ working space है, उसके ऊपर भी dependent रहता है. For example, if you are sitting in an AC environment, okay, so the direct glow might not be on our face, but if we sit in the AC environment, there is a drying effect due to the AC, which leads to cumulative increase in the dryness. अगर हम 2 मिनट या 5 मिनट AC में बैठे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. But if we sit in the AC continuously for 3 to 4 hours continuously, so the drying effect of the AC is there. ड्राइनेस जो है हमारे आंख में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज करने की वजह से भी होता है. सो जब हम स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, हमारी जो ब्लिंकिंग की कैपेसिटी है, नॉर्मली वी हैव टू ब्लिंक एटलीस्ट 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज एवरी 4 seconds. लेकिन जब हम किसी काम में उलझे हुए हैं, व्हेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, वी कॉन्शियसली फॉरगेट कि हमें ब्लिंक करना है, आंख खोल बंद करनी है, एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट द स्क्रीन. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द ब्लिंकिंग रेट हैज बीन decreased in such people by almost 1/3. So if we have to blink at least 12 to 15 times, हमारा blinking बहुत कम हो जाता है, sometimes even as less as 4 to 6 times in a minute. So जो interval है blinking के बीच में, उसमें कैसे रहता है कि if we don't blink the eyes, जो हमारे आंसू रहते हैं वो बराबर आंख के ऊपर spread नहीं होते. तो the longer the interval, जितना आंख हम खुला रखेंगे, वो जो आंसू है बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, and it leaves the eye surface very dry. So dryness के वजह से, क्योंकि ये surface को अगर हम lubricate ना करें वहां पर, तो वो सूखने के वजह से blurring of vision होता है और आंख में irritation और inflammation ये सब चीजें होती है. क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे lids और आंख के surface के बीच में जो tears है वो एक lubrication का काम करती है. अगर lubrication ना हो बराबर से तो friction हो जाता है आंखों में, और फ्रिक्शन के वजह से जो इरिटेशन और ऐसे प्रिकिंग सेंसेशन, चुभन जलन जैसे फीलिंग होती है, और उसके वजह से जो ड्राइनेस का फीलिंग आता है, ऐसे लग रहा है कि कुछ आंख में गड़ रहा है, दैट इज कंप्लीटली ड्यू टू द ड्राइनेस इफेक्ट व्हिच इज देयर, एंड दिस इज ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ टीयर्स व्हिच अकर्स ड्यू टू इंक्रीज. सो या वेरी मच ड्राइनेस, रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन, आंख को आंख में ट्विचिंग होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डबलिंग ऑफ विजन, कभी कभी बीच बीच में धुंधला दिखता है. इट्स नॉट कि सबको कंटिन्यूसली धुंधला दिखता है, बीच बीच में अनलेस दे ब्लिंक कंटिन्यूसली it becomes blurred intermittently. So that is due to the dryness which is there. Headache can occur, and obviously when you are sitting in a continuous posture and in front of the screen for 2 hours, 3 hours, the posture is not correct. Neck pain, shoulder pain, back pain, all these things also add up. So apart from the eyes, a lot of other side effects which are also.
Okay, so you are saying that this is called as computer vision syndrome, right? Yes, yes, yes. So The it symptoms is, of, it is, yeah. yes, it is commonly known as computer vision syndrome because earlier computers used to be the only thing. It's only now that you have a lot of mobile use So and what is the difference between computer and mobile screen? If because हमारे बहुत सारे ऐसे schools हैं जिनके जो बच्चे हैं, they don't have this computers or laptops at home, so they have to study on the mobile phones. Many of our teachers, they are also using mobile phones to teach. So वो syndrome same ही रहेंगे उनके, या उनके शायद yes, कुछ अलग हो जाएंगे? yes. Syndrome will actually जो manifestations है, जो तकलीफें हैं, will be the same. It is only that the computer vision syndrome has been given a particular name as computer. लेकिन उसके वजह से जो तकलीफ होने वाली है, if you go to compare between computers and mobiles, तो one on one अगर देखा जाए तो कंप्यूटर स्क्रीन जो रहता है वो normally is a little larger, is a little wider than the mobile screen. It is also kept at a farther distance, बहुत दूरी पे रहता है. So we normally don't use the computer as close as the mobile. So these two factors are very important in differentiating the strain related to computer and mobiles. तो अगर देखा जाए तो the bigger the screen, जितना बड़ा screen रहेगा और जितना दूर रखा जाए, the better it is. Okay. So in that case, computer screen is a little better than using a mobile. क्योंकि आजकल ऐसे हो गया है कि मोबाइल इज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग फोन कॉल्स, इट इज यूज्ड फॉर डूइंग योर प्रेजेंटेशन, इट इज यूज्ड फॉर सीइंग movies, it is used for seeing certain videos. तो जो absolutely and studying as well. So जो हम ideal बोलते हैं कि the use of mobile for such purposes, especially जिसमें बहुत बारीक नजर की जरूरत पड़ती है, for fine work, when you have to actually read something, you have to concentrate on something, उसके लिए मोबाइल इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. गो फॉर अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप. Obviously जिनके पास लैपटॉप है and they are able to, those who have the modern TVs, they can display it on the TV as well. So displaying something on a TV is again much better than watching something on the computer. Firstly, because of the size of the TV screen and the distance at which you are watching. So the farther the distance you keep something, the eyes are more relaxed. क्योंकि हमारे जो आंख के मसल्स है, they are more active जब हम नजदीक का काम करते हैं. And unless we relax them by looking at a farther distance, वो strain या जो spasm होता है आंख में, वो चला नहीं जाता है. So definitely computer use is much better compared to a mobile. But आजकल अगर देखा जाए कि when in the olden times we used to have the CRT or the cathode ray tube desktops, जहाँ पे फ्लिकरिंग होता था, ओके, दैट वाज नॉट वेरी गुड, बहुत ही इरिटेशन और फटीग होता है उसके वजह से. Thankfully nowadays, because of the LCD and the LED screens which have a component of anti-glare coating on them, and even the modern mobiles, they are much better than the older mobiles which or are the non-smartphones. So internal to the computer display and even in the mobile display, if we really go into the settings, डिस्प्ले सेटिंग्स में भी बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शंस रहते हैं, जो टेक्स्ट साइज है कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के ऑप्शंस रहते हैं. सो जो बैकग्राउंड रहता है इट हैज टू बी मैचिंग टू द सराउंडिंग्स. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज या मोबाइल यूज करते वक्त बाजू के लाइट्स पूरे बंद कर देते हैं, बहुत कम लाइट में काम करते हैं, तो दैट इज नॉट आइडियल. तो जितना हम कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड मैचिंग टू दी सराउंडिंग रखे उतना अच्छा रहता है. और उसका ब्राइटनेस के बारे में कुछ बताएंगे कि कितना? यस एब्सोल्युटली. सो ब्राइटनेस का ऐसे रहता है कि ब्राइटनेस कैन बी एडजस्टेड इन सच वेज दैट you have a mode wherein there is a night mode which is available even in the computers, even in the mobiles. So the night mode helps basically block the blue light. So blue light or ultraviolet light, which is very inherent in all the screens, whether it is a computer screen or a mobile screen. तो अल्ट्रावायलेट लाइट रहता है, उसके प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज इट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ, उसमें एनर्जी बहुत रहता है. तो ब्लू लाइट में एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो इट क्रॉसेस द लेयर्स ऑफ द आई एंड हिट्स द रेटिना व्हिच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई फॉर लाइट परसेप्शन.
उसमें प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो ये जो ब्लू लाइट है उसको ब्लॉक करने के लिए या कम करने के लिए देयर आर ऑप्शंस वेयर द ब्राइटनेस कैन बी डिक्रीज्ड. और स्पेशली जो लोग ज्यादा नाइट में काम करते हैं वो नाइट लाइट का ऑप्शन रहता है, नाइट विजन का ऑप्शन रहता है. सो वेर इन द spectrum of the light is changed to more warmer colors. So the blue light is said to be a cooler color. Warmer colors जो orangish या yellowish hue में काम करते हैं, that is much more soothing to the eye and much more comfortable. Okay, and what about the angle? मतलब कहाँ पे प्लेस कर सके ये लैपटॉप को या फिर स्क्रीन को, उसका एडजस्टमेंट मतलब what is the ideal location and the situation? Absolutely. तो उसमें कैसे रहता है कि the ideal positioning जो हम बोलते हैं कि हमें बैठते वक्त आइडियली टेबल पे डेस्कटॉप रखना है. वी शुड बी सिटिंग इन अ चेयर विद अ आर्म रेस्ट एंड विद अ प्रॉपर बैक रेस्ट. तो ऐसे कहा जाता है कि आइडियली द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम योर आईज शुड बी एटलीस्ट 20 to 25 inches. So it is almost 50 centimeters. रफली अगर देखा जाए तो इट शुड बी वन आर्म डिस्टेंस. तो अगर हम हमारा हाथ आउटस्ट्रेच करें, so the screen should be just touching our fingers when you outstretch our arms, or just beyond that. So that is the ideal distance. Again, the level of the screen should neither be very high nor too very low. It should be just below your eye level. So if you are sitting, it should be if the eye level is at a particular level, it should be just 4 to 5 inches below. Taki we don't have to either bend our necks too much or extend our necks too much. That is the ideal position. Again, our arms should be resting completely on the armrest. अगर chair पे armrest हो तो वहाँ पे rest होना चाहिए. And our back should be completely straight. So we should not be crouching too much. We should not be extending too much. और ideally अगर seat में back rest हो या lower back पे अगर कुछ cushion रखे या inherently जो बहुत सारे modern chairs में थोड़े curves रहते हैं वो अगर रहेगा, especially for the lower back, it gives prolonged support. We have to also ensure कि हमारे जो पैर है they should not be hanging in the air. हमारी पैर they should be firmly touching the ground, and the knees should be at 90 degrees. They should not be extended too much, or they should not be in the air, or they should not be moving around. तो ये अगर position हम ideal रखें for your computer use, then we can probably continue working for very extended periods of time. बट ऐसे कहा जाता है कि हमारे टर्मिनोलॉजी में 20-20-20 रूल रहता है कि आफ्टर एवरी 20 minutes ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन वी हैव टू लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज 20 feet अवे एंड ब्लिंक आवर आईज कंटिन्यूअसली. तो उससे कैसे होता है कि एक तो हमारा फोकस इज चेंज फ्रॉम द स्क्रीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से आंख को भी स्ट्रेन कम हो जाता है और आंख का स्ट्रेस कम हो जाता है. So if people are able to follow this 20-20-20 rule, it is very good. And obviously, बैठे-बैठे हम जो exercises कर नहीं पाते हैं, sometimes the eye exercises can be done while sitting, but it is also important to get up from the chair and stretch your back, stretch your arms, ताकि बैठने के बाद भी कभी-कभी कुछ side effects हो सकते हैं, that those are prevented. So there are a lot of ideal positions. About eye exercises, that sounds really good. I Yes. think I would request you कि हमारे जो यहाँ पे audience join हुए हैं live और जो हमें देख रहे हैं, they will be more interested कि अगर आपने थोड़े से हमें उसकी एक झलक दिखाई कि eye exercise की, तो हम लोग भी आपके साथ eye exercise करेंगे. Definitely. तो जैसे मैंने बताया था कि आई एक्सरसाइजेस टाइमिंग वगैरह है या दिन में कभी भी आप कर सकते हैं? दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग गैजेट्स की या ऐसे कुछ सेपरेट एरिया की जरूरत नहीं है. आप बैठे बैठे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपके वर्क स्पेस में भी कर सकते हैं, आप लंच ब्रेक में कर सकते हैं, सुबह को ऑफिस या काम पे जाने के या स्कूल जाने के पहले कर सकते हैं, और रात को एक बार चीजें कर सकते हैं. सो एटलीस्ट दीज कैन बी डन 2 to 3 times in a day. And these are absolutely things which don't need any special equipment. So I will tell you some of the exercises which can be done. So basically जैसे मैंने कहा कि आँख का फोकसिंग जो है वो दूर से नजदीक चेंज करना जरूरी है.
So what we can basically do is focus at a distant object which is more than 20 feet away. तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है for around 5 to 10 seconds. Then we move our focus at a closer object. उसे हम 5 to 10 seconds देख सकते हैं. This has to be repeated alternately at least 10 times. Okay. So it can be done for 5 minutes, 3 times in a day. If it becomes very difficult to focus on a specific object, हम कभी-कभी ऐसे कर सकते हैं कि पेन को सामने रख सकते हैं. तो एक पेन हमें लेना है at arm's distance. Focus at its tip. उसे focus करके हम उसे नजदीक ले सकते हैं. धीरे-धीरे we bring it closer to our eyes till the time we can focus it. You can use it also, right? We can use a thumb, we can use a pen as well. They usually have this. Absolutely. So you can outstretch. Yes, you can outstretch the thumb as well and keep focusing on the tip of the thumb. So what we do is bring the thumb closer to us and concentrate on the tip of the thumb. We have to continue till we are able to focus it. एक टाइम पे ऐसे हो जाएगा कि the thumb will be very blurred, बहुत धुंधला दिखेगा या डबल दिखने लगेगा. So that is the time we have to realize the focusing ability कम हो गई है or it has stopped. So accordingly we blink our eyes again, take the finger in front and again do it. So we can continue this again for 10 times for 5 minutes in 3 sessions throughout the day. Another thing is rather than moving the hand, you keep one thumb in at arm's distance and the other thumb midway between your eyes and the outstretched thumb. So we just keep changing our focus rather than moving the hand, just keep changing our focus from distance to near, which can be done at a similar rate. Yeah, so I can just tell there are many children who have joined today's program. बिल्कुल. आप लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर दिखा रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज आप रेगुलरली कीजिए तो आपके आंखों को तकलीफ नहीं होगी. अगर आप और ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है. आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड. बहुत ही पेचीदा एक्सप्लेन करके यूज नहीं है. तो ये जो चीजें घर बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं. These are things which could be followed. Also there are certain exercises where we move the eyes in 9 different directions. तो हमारे आँख के जो मसल रहते हैं, आँख के जो मसल बहुत बार नजदीक का काम करते हैं. Only a few muscles are being used, and because they are constantly used, they go into fatigue and weakness. तो intermittently हम जो मैं आई एक्सरसाइज अभी दिखाने वाला हूँ वो भी फॉलो करेंगे तो अच्छा है. तो बेसिकली we have to look in 9 different directions. तो पहले हमें ऊपर देखना है towards the up, then down. We don't have to move our head. It's only the eyes which have to move. So we can look up, we can look down, look to the right, look to the left, and diagonally we देख सकते हैं. So if you want to look towards the top on the right side, towards the right side down, towards the top on the left side, and towards the left side down. तो ये जो positions हैं उसमें हमारे सभी आँखों के जो muscles रहते हैं वो active हो जाते हैं. And the muscles which are being excessively used उनको भी exercise हो जाती है. जो muscles use ही नहीं करते हैं नजदीक का काम करते हैं उनकी भी exercise हो जाती है. तो आँख का coordination जो रहता है, क्योंकि आँख के muscles जो है हम जो यूज करते हैं दोनों आँख कोऑर्डिनेशन करके ही यूज करते हैं. तो दोनों आँख के मसल्स अगर इस प्रकार हम एक्सरसाइज करें तो बहुत ही फायदेमंद रह सकते हैं. So these are a couple of exercises which can be followed. They are very basic. Thank you so much. And in fact, Dr. Sohail, I would like to tell you here that we conduct a lot of workshops for parents, teachers, and students. So अभी हमें इतना मतलब we realize when we conduct this positive parenting workshop in different schools from different socio-economical background. So many times we have seen parents, children, they are into different angles. There's somebody sleeping and watching the mobile, because you are working from home. जो ऑफिस में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, देयर इज अ प्रॉपर डेस्क, चेयर, टेबल सब रहता है, बट घर के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर घर के अंदर यू जस्ट हैव बेड, यू मे नॉट हैव टेबल एंड चेयर आल्सो. तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ना उनके पास कंप्यूटर स्क्रीन है, मे बी दे आर जस्ट लाइक ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड देख रहे हैं. तो अगर मोबाइल फोन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि उसका किस तरह से इस्तेमाल और क्या लेवल
क्या डिस्टेंस पे उसे रखे और कैसे बैठे, कैसे पोस्चर उनका कायम करे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हम सिचुएशन अगर पकड़ें कि लोगों को फ्लोर पे बैठ के अगर पढ़ाई करनी है, तो हाउ कैन दैट बी डन? फ्लोर पे बैठ के पहले ऑल्सो के जमाने में जमीन पे ही बैठ के खाना भी एब्सोल्युटली खाते थे और एब्सोल्युटली। पढ़ाई भी सो करते थे। उस जमाने में कैसे रहता था कि पीपल वो एक्चुअली यूज्ड टू सिटिंग ऑन द फ्लोर और वो प्रॉपर पोजीशन लेके बैठ पाते थे। आजकल ऐसे हो गया है कि बहुत बहुत सारे यंग किड्स आर नॉट इवन एबल टू सिट इन दैट पर्टिकुलर asana, or we call it the yoga asana. So it is very important to ensure कि जब हम फ्लोर पे अगर बैठ रहे हैं, it is a good way of studying. It is not a bad way at all because it boosts the flexibility and mobility. If you take the proper posture, अगर we sit cross-leg on the floor, okay, and ensure that you shift your weight on the hips, not on the legs. तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि आगे आके legs पे पूरा जोर देते हैं, and they tend to bend and read something on the lap. So that is not the ideal way. हम जो नॉर्मल आसन करते वक्त जो बैक स्ट्रेट रखते हैं एंड एंटायर वेट ऑफ द बॉडी हैज टू बी शिफ्टेड टू द हिप्स, नॉट ऑन द लेग्स, ताकि बैक भी स्ट्रेट रहे एंड द लेग्स आर आल्सो फोल्डेड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. तो उसमें कैसे है कि कीपिंग द रीडिंग मटेरियल, बहुत सारे लोग हमारे उनके लैब पे ही किताबें रखते हैं या मोबाइल रखते हैं. दैट वुड नॉट बी द आइडियल पोजीशन, क्योंकि एक तो वो जो डिस्टेंस हो जाता है पढ़ने का बहुत ही नजदीक हो जाता है, और उसके वजह से कैसे होता है कि द पर्सन हैज टू bend his neck too much if he is keeping the reading material or the mobile on the lap. तो आइडियली अगर उनके पास एक फर्शी या जो रहते हैं, they have a plank wherein which can be kept at an angle in front of them, say not like a table. So table will be completely flat. कोई भी ऐसे फर्शी अगर हो के पास बोर्ड हो जो एक एंगल से अराउंड 45 to 60 डिग्रीज एंगल पे रखे, जिसके वजह से उनका व्यूइंग एंगल भी अच्छा रहे. सो इट वुड बी द आइडियल पोजीशन. यूजिंग द मोबाइल, अगेन मोबाइल के लिए कैसे हो जाते हैं, मोबाइल का यूज ना करे. आइडियली नॉट. लेकिन मोबाइल अगर जरूरत की पड़े तो इट शुड नॉट बी टेकन टू क्लोज टू द फेस. अगर देखा जाए तो मोबाइल्स शुड बी केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 to 40 सेंटीमीटर. तो देखा जाए तो within an arm's distance it should be kept but not too close. Okay, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा तो बहुत स्ट्रेन हो सकता है. So handheld studying, holding the book in the hand or holding the mobile in the hand will not be an absolute ideal situation for prolonged time. तो अगर किसी सरफेस पे रख कर मोबाइल या किताब पढ़ी जाए, और स्पेशली अगर वो एंगल्ड हो, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस रहेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे जाके उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, which will not be the ideal position because he's putting the strain on his legs. So the more he sits against a wall, so rather than sitting without any back support, sitting against a wall on the floor so that the back is also rested, and taking an angled surface wherein the reading material is at a good viewing distance would be ideal. बहुत सारे लोगों के ऐसे सिचुएशन रहते हैं कि बेड पे ही बैठ के काम करना पड़ता है. So it's a very tricky situation to be studying because it becomes so cozy at times कि slowly वो सो जाते हैं. So but still again, अगर if there is no other option, we have to make certain modifications. So keeping the bed against the wall, तो हमें बैक रेस्ट करना जरूरी है. किसी भी सिचुएशन में हमें बैक को फ्री नहीं रखना है. So if the wall is not there, we can keep 2 pillows behind the back so as to give some kind of support to the back. And also जैसे मैंने कहा कि while sitting on the floor, अगर छोटा स्टडी टेबल रहेगा जो बेड पे रख सकते हैं, it would be ideal. नहीं तो कोई भी surface, like a small blackboard type रहता है, which can be kept at an angle of say 45 to 60 degrees so that comfortably लिखना भी हो जाता है. अगर कुछ लिखने की जरूरत है, you don't have to come forward and write on a study table. It becomes easier to write and then read accordingly for that as well. But जैसे मैंने कहा कि ये सब ideal situations नहीं है. Very important thing to consider is कि जो lighting होना चाहिए,
अगर पढ़ते वक्त वो लाइटिंग है वो कहाँ से आना चाहिए, सामने से आना चाहिए, पीछे से आना चाहिए, साइड से। बहुत सारी सिचुएशंस में हम एडवाइस करते हैं कि जो फोकस्ड लाइट है किसी भी रीडिंग मटेरियल में, दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम द साइड, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, सामने से भी ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे और पीछे से भी ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, या तो डायरेक्टली ओवरहेड होना चाहिए। सो द लाइट शुड नॉट बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज देयर इज चांस कि हमारा शैडो उस पे पड़ जाए रीडिंग मटेरियल पे, दैट इज नॉट आइडियल। एंड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल देयर विल बी टू मच ऑफ फोकस, एंड द रिफ्लेक्शन जो आता है लाइट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रीडिंग मटेरियल माइट नॉट बी वेरी प्लेजेंट। तो जो लाइट है या तो डायरेक्टली ऊपर से फोकस होना चाहिए या तो साइड से, तो हैविंग अ स्मॉल लैम्प or a study lamp on the side of the reading material is ideal in such situations. Okay. एक मेरी क्वेरी है कि अभी आप I'm talking about specially mobile phones, because Yes. all our studies are usually happening on mobile phones. So mobile phones Yes. में भी there are different range रहती है कि बहुत minimum जो smartphone starts like एक minimum range के, और जो बहुत high end mobile phones भी है, तो उनकी जो स्क्रीन है और उनके जो रेडिएशंस है और उनका जो इफेक्ट हमारे आंखों पे होता है, क्या वो सेम होता है कि आप सस्ते वाले फोन ले या फिर जो महंगे वाले फोन है, उसमें कुछ डिफरेंस रहता है? या डेफिनेटली। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हम पुराने जमाने में से फोन विच यूज टू हैव अ डायल, प्रॉपर नंबर्स के लिए डायल रहते थे, उनके स्क्रीन बहुत छोटे रहते थे, बिकॉज हमें नंबर डायल के लिए, नंबर्स के लिए जो कीपैड रहता था, सो द स्क्रीन यूज टू बी वेरी स्मॉल इन दोस केस, एंड बहुत सारे अभी भी मिलते हैं। सो उनके जो डिजिटल डिजिटल डेटा रहता है, सो दिस इज नॉट द आइडियल स्क्रीन टू बी यूज्ड, क्योंकि पहले तो स्क्रीन का साइज जहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं या कुछ देखते हैं वो भी छोटा रहता है, और जो एनालॉग रहता है उसमें इज नॉट द आइडियल डिजिटल नंबरिंग, जो और जो लेटर्स रहते हैं दे आर नॉट आइडियल। तो जो छोटे मोबाइल उस टाइम के रहते थे आर नॉट द आइडियल मोबाइल्स टू बी यूज्ड फॉर स्टडिंग और फॉर वॉचिंग। अभी जो स्मार्टफोन्स आए हैं प्रोग्रेसिवली, जैसे हम देखा जाए तो कीपैड चला जाता है और स्क्रीन साइज बढ़ जाता है। सो some of the mid-range phones are very, they have a smaller screen compared to the actual phone size. और जो आजकल लेटेस्ट अगर मोबाइल हाई एंड देखा जाए तो उनके इन्फिनिट डिस्प्ले रहते हैं, इनफाइनाइट डिस्प्ले रहते हैं, विच हैव अ मच लार्जर स्क्रीन। तो जितना लार्जर स्क्रीन रहे वो बेटर रहता है। एंड ऑब्वियसली जो हाई एंड फोन्स हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो डिस्प्ले के सेटिंग्स हैं जिसमें हम ब्राइटनेस या जो कॉन्ट्रास्ट है या जो टेक्स्ट साइज है चेंज कर सकते हैं, और जो जैसे मैंने बोला कि नाइट मोड का ऑप्शन रहता है कि अगर हम कम लाइट में काम कर रहे हैं तो उसमें नाइट लाइट या जो ब्लू लाइट कट ऑफ फिल्टर जो रहता है, सो ये जो हाई एंड मोबाइल्स में जो फीचर्स रहते हैं आर कंपैरेटिवली मच बेटर देन द लोअर एंड फोन्स। बहुत सारे केसेस में लोअर एंड फोन्स में भी ये फीचर्स आ जाते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मोबाइल, और ये सब चीजें अगर अच्छी हो तो डेफिनेटली द स्क्रीन स्ट्रेस जो हम कहते हैं कि होने वाला है फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज इज गोइंग टू बी मच लेस। सो ये जो फीचर्स हैं बहुत सारे मोबाइल्स में रहते हैं, बट as we go to see the higher end machines, higher end mobiles have much more user friendly or eye friendly features. So I think whatever device we have, it's better that we start taking care of our eyes. तो Absolutely. अगर आप हमें कुछ टिप्स देंगे कि हमारे आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए? या डेफिनेटली। तो बेसिकली कैसे है कि हम जो नॉर्मली जो चीजें करते हैं, आई हैव बीन नोटिसिंग, और फॉर एग्जांपल कि रबिंग द आईज, हम आंख को बहुत ज्यादा मसलते हैं, सो इट इज अ वेरी बैड हैबिट। फर्स्टली व्हाट हैपेंस इज दैट जब हम आंख को मसलते हैं, आंख को बहुत ज्यादा रब करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से आंख में सूजन हो जाती है और ड्राइनेस का कंपोनेंट बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आंख में से पानी आना, लाल होना हो सकता है। सेकेंडली, अगर हम हाथ धोए बिना आंख को मसले या आंख को रब करें, तो हाथों में जो जंतु रहते हैं या डस्ट या एलर्जी या जब इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं।
So rubbing the eyes is not a good idea. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम आंख पे पानी मारे या चेहरे पे पानी मारे तो it decreases the dust and all the components or the allergy components which could be affecting the eyes. So not necessarily splashing water inside the eye, but washing the face at least 2 to 3 times a day is very important. अगर ड्राइनेस का कंपोनेंट हो तो उसके लिए आंख के लिए ड्रॉप्स जो हम लुब्रिकेटिंग या आंख के ड्राइनेस के लिए ड्रॉप्स देते हैं वो यूज करना बहुत जरूरी है. तो ये जो है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स बहुत ही कॉमनली अवेलेबल रहते हैं. डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है, बट ओवर द काउंटर भी कभी कभी यूजफुल मिल जाते हैं ये ड्रॉप्स. सो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या ड्राइनेस के लिए जो ड्रॉप्स रहते हैं दोज कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ड्राइनेस. हम दिन में उसे 3 से 4 बार डाल सकते हैं. सो इन बोथ आईज 1 ड्रॉप ईच. वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि जब हम बाहर जाए और बहुत ज्यादा धूप हो तो सन ग्लासेस यूज करें क्योंकि बहुत ज्यादा धूप में जाने की वजह से आंखों में तकलीफ हो सकती है. और जो ड्राइनेस का कंपोनेंट अगर बहुत विंडी एनवायरनमेंट बहुत धूल मिट्टी हो तो उसके वजह से भी आंखों में तकलीफ हो सकती है. तो सन ग्लासेस का इफेक्ट टू डिक्रीज द सनलाइट and to protect our eyes from dust or such allergies or some foreign bodies going into the eyes. So wearing sunglasses while going outdoors, especially in the sunlight, is very important. Also, following a balanced diet. हमें आहार जो है यार खाने में जो चीजें फॉलो करनी चाहिए बहुत जरूरी रहती है. देखा जाए तो जो हरी सब्जियां रहती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, those are very important for your eye, maintaining the eye health. जो हम फल खाते हैं, especially जो citrus fruits, खट्टे fruits रहते हैं, like oranges, lemons, और वो जो भी ऐसे खट्टे मौसम्बी और जैसे खट्टे fruits रहते हैं, those are very important because of the vitamins that they are provided by. जो दूध और दूध के पदार्थ रहते हैं, like milk, curds, लस्सी, even cheese and butter are important for the eye health. और अगर कोई वेजिटेरियन है तो इनके लिए जो हमारे दाने रहते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स और पीनट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो फैटी एसिड्स रहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द आई. और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए अगर फिश खाते हैं या कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं उसकी वजह से भी जो प्रोटीन्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आई. तो ये जो चीजें हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द रेटिना, जो हमारी पीछे की नस रहती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एंड ऑल्सो फॉर जनरली मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द आई. प्लस इफ यू गो टू सी, हमने जो आई के एक्सरसाइज बताए, over and above that having a good physical exercise, physical exercise अगर हम अच्छा रखें तो उसके वजह से मोटापा जो ओबेसिटी है उसके वजह से भी कभी भी आंख में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू डायबिटीज व्हिच कैन डेवलप. और अगर आजकल के बच्चों में भी देखें तो वेरी यंग चिल्ड्रन फ्रॉम एज ऑफ इवन 50-20 years of age are developing diabetes. तो डायबिटीज के वजह से जो आंख में तकलीफ हो सकती है वो अगर प्रिवेंट करना है और आई के प्रेशर्स के वजह से जो इश्यूज रहते हैं उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है. सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लेइंग आउटडोर्स, क्योंकि हमारा अगर हम देखें कि आजकल के बच्चों में जो बाहर खेलने का जो समय है वो बहुत कम हो गया है. बहुत टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं अपने गैजेट्स पे या अपने मोबाइल. पैंडेमिक में दे कांट इवन गो आउट, तो दैट इज आल्सो अनदर. एब्सोल्युटली. तो जो आउटडोर एक्टिविटीज है कम होने की वजह से अगर फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है तो दैट इज आल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द आईज. सो ये कुछ जनरल टिप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं. एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एंश्योर कि हम जो हम स्क्रीन टाइम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज ना हो उसके लिए फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेना, बीच बीच में मूव आउट, डोंट कॉन्स्टेंटली. सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा कम सक्रिय रहे तो वी कैन एब्सोल्युटली.
क्योंकि सोशल मीडिया के इसमें बच्चे या कोई भी है, दे गेट सो एनग्रॉस्ड इन इट that they sit for hours in front of the समय का screen. पता ही नहीं चलता फिर. Absolutely. और उसके वजह से as we have touched upon the point, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं डेवलपमेंट में, जो हमारा इंटरेक्शन. अभी जस्ट यही क्वेश्चन आपको पूछने वाली थी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तो यू कैन कंटिन्यू कि कैसे ये हमारा जो स्क्रीन स्ट्रेस है या फिर टेक्नोलॉजी स्ट्रेस है, और यू कैन से आई स्ट्रेन, इज इट रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ आल्सो? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर देखा जाए कि आजकल के बच्चों का जो एक्सपोजर है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, और उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो बहुत एक कम उम्र में बच्चों का एक्सपोजर उनको हो रहा है. सो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज, जो लैंग्वेज एक्विजिशन रहता है और कम्युनिकेशन जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन में, वो कम हो गया है. अगर हम देखें तो कभी हम पार्टी में जाए या बहुत फैमिली का गैदरिंग भी हो बहुत टाइम के बाद, या कैजुअली कॉफी पे भी किसी को मिलते हैं या डिनर पे हमारी फैमिली को मिलते हैं, तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो यंगर पॉपुलेशन है, यंगर जो किड्स रहते हैं, दे आर मोस्टली जस्ट बिजी ऑन देयर फोन्स. तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, या जो हम बोलते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो एक कम उम्र में डेवलप हो सकता है, वो बराबर से डेवलप हो नहीं पाता. एंड जो इंटरपर्सनल स्किल्स रहते हैं, जो आगे जाके डेफिनेटली is important from the education point of view and even in your career point of view, that is very much lacking and decreased in people who are not used to, or who are just used to isolating themselves and using only the screen time. Very important issue to discuss is also the sleep which is affected. कि जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, there is a decrease in the sleep quality and the sleep duration as well. तो उसके वजह से कैसे होता है कि बच्चों में अगर नींद बराबर ना हो, तो उसके वजह से इरिटेशन या इरिटेबिलिटी, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो अगर वी गिव अ गुड स्लीप हाइजीन, जो हम प्रैक्टिसिंग गुड स्लीप हाइजीन है, यानी बिफोर गोइंग टू स्लीप यू हैव टू कट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स. तो उसके वजह से कैसे होता है कि जो स्क्रीन टाइम, कंटिन्यू स्क्रीन टाइम और ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से, ब्लू लाइट हैज एन इफेक्ट ऑन जो हमारे स्लीप इंडक्शन में एक हार्मोन रहता है मेलेटोनिन, जो हेल्प्स इन स्लीप इंडक्शन. सो द मेलेटोनिन प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय द ब्लू लाइट, क्योंकि हमारी जो यूवी रेज हैं, जो ब्लू लाइट है, इज इवन एमिटेड फ्रॉम द सन. So if we are exposed to these blue light or blue rays from the screen, it mimics the daytime. तो अगर रात को पूरे अंधेरे में if we are using the screen time, तो जो normal sleep induction है वो होता नहीं है, क्योंकि हमारे brain को एक activity मिल जाती है कि अरे अभी तक दिन चल रहा है, so it remains active. So unless that screen is cut off and you are relaxed in environment, the sleep induction is affected. और स्लीप कम हो या स्लीप बराबर ना हो, उसके वजह से जैसे मैंने बोला कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, फटीग. तो जो कंसंट्रेशन लेवल है बच्चों का ड्यूरिंग द डे इज वेरी मच डिक्रीज अगर उनका स्लीप बराबर ना हो. एंड ऑल्सो एज आई सेड कि जो कंटेंट सोशल मीडिया पे रहता है, people are very much now fascinated by following influencers, celebrities, और उनके बारे में पढ़ के, so they are enamored by images of persons they have never met. Large social media following रहती है लोगों की, so they are very much attracted to that, and they feel कि अरे ये जो celebrities हैं वो एक picture perfect life follow कर रहे हैं, so they try to compare themselves with such celebrities whom they think are having an absolute ideal life. तो कभी-कभी जो self confidence है, जो self esteem रहता है, that becomes very low, and because of that there's a lot of negativity and negative self talk happens, and body image issues happen, especially when they look at celebrities, they look at ideal actors, actresses, और कभी-कभी लोगों में वो body image issues भी हो जाते हैं. So all this negatively affects the morale of the kids,
the self-esteem, and they start thinking a lot of negative things. So ये जो है can also lead to a lot of mental issues down the line. Yeah, so we get a lot of cases on our helpline. In fact, I would like to share the helpline number यहाँ पे. अगर कोई भी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, it's not just about kids or parents, but anybody from any age group, they can avail this facility at free of cost. अगर आपको लगता है आपके बच्चों के साथ मे बी उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, उनके लर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा है, उनका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो आप लोग बेझिझक ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम किसी के साथ मतलब आपका कोई भी डेटा शेयर नहीं किया जाता. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. मंडे टू संडे सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक हमारी ये लाइंस खुली है. हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स हैं जो आपको आपका जो कुछ भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको फ़ोन के ऊपर करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देयर कैन बी अ जूम कॉल ऑल्सो, बट फ़ोन के ऊपर आपके सारे समस्याओं का वो निवारण कर देंगे. तो ये हमारा नंबर है. अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, फ़ोटो लेने हैं, तो यू कैन टेक दिस नंबर and you can always call us on this helpline. It's completely free of cost. We don't charge anything. With the great support of Capgemini, we could make it free of cost for everyone. Yeah, so thanks, Shri. Yeah, sorry doctor, sorry to interrupt you, because I thought this is the right time, because when we are talking about mental health, so we are having these services which can be, everybody can take help of that mental health service. Absolutely, absolutely, and I think so you are doing an absolute great job, because क्योंकि कैसे है कि आजकल के बच्चों में सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम की वजह से जो दुष्परिणाम होते हैं, for that we cannot just leave them without proper guidance and without proper counseling. So these things have to be done so that they understand the value and it helps them to develop as good citizens down the line as they grow up. Absolutely. Yeah. Very so good. I think it was really wonderful, Dr. Sohail, having you over here. I think मेरे questions तो सारे आपने उसके मुझे answer दे दिए. So I will be more, I will start taking care of my eyes regularly. I will start using my specs also regularly. And of course, we have to take care of जितना distance आपने बताया, जैसे 20-20-20 का formula आपने बताया. So I think now I will open the forum for audience. अगर किसी को डॉक्टर से क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज आप आपके माइक अनम्यूट कर दीजिए, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए और आप डॉक्टर सर से you can directly interact. So I have a question. Sir, you have told that how much distance. I know that distance because Sorry, the distance from? Was she asking about the distance from the screen? Yes, sir. Yeah. तो आइडियली जो है जैसे मैंने कहा कि अगर मेजरमेंट करना है तो 20 to 24 इंचेस या 50 सेंटीमीटर्स पकड़ के चल सकते हैं, या तो बहुत इजी है कि हम हमारा आर्म आगे स्ट्रेच करके जो फिंगर टिप्स हैं उसके जस्ट आगे हमारा स्क्रीन रखें. सो दैट विल बी द आइडियलिस्ट. उससे नजदीक रखेंगे तो इट विल बी टू क्लोज एंड इट विल लीड टू लॉट ऑफ आई स्ट्रेन. एंड कीपिंग इट टू फार अवे इज ऑल्सो नॉट आइडियल, क्योंकि उसके वजह से लॉन्गर द डिस्टेंस, और अगर आप कुछ छोटा देख रहे हैं, अगर फॉन्ट साइज आप बराबर रखो तो नो इश्यूज, लेकिन अगर छोटा फॉन्ट देख रहे हैं तो इट विल नॉट बी एब्सोल्युटली क्लियर और कंफर्टेबल रीडिंग एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो टेक्स्ट साइज, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर. अगर आप थोड़ा दूर रख रहे हैं स्क्रीन को भी, तो जो टेक्स्ट साइज आइडियल होना चाहिए, जो आप नॉर्मली छोटे से छोटा फॉन्ट देख सकते हैं, उससे ट्रिपल टाइम्स यानी 3 टाइम्स फॉन्ट रखेंगे तो इट इज वेरी कंफर्टेबल. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 8 नंबर फॉन्ट का सबसे छोटा चीज 8 नंबर फॉन्ट का देख पाते हैं,
तो कंफर्टेबल रीडिंग के लिए हमें 20 या 24 फॉन्ट तक रखेंगे, तो इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर रीडिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज, या कुछ भी काम करना है, कुछ भी पढ़ना है, तो उसके लिए एटलीस्ट ट्रिपल द साइज ऑफ द फॉन्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही प्लेन और सिंपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग समथिंग ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, इट शुड बी the black the letter should be in black, it should not be a light color। जो लो कॉन्ट्रास्ट रहता है बैकग्राउंड और मटेरियल के बीच में, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ टायरिंग ऑन द आईज। जो बैकग्राउंड है वो बहुत बिजी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ पिक्चर्स या कुछ इमेजेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड जिसपे बोल्ड लेटर्स में फॉन्ट हो इन ब्लैक स्पेसिफिकली, और ज्यादा कर्सिव या जो इंट्रिकेट फॉन्ट्स रहते हैं वो ना यूज करें, बिकॉज दे अगेन कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू। Any other question? Yes, Yeah, good evening. Good evening. Acha. Yes, Somebody ma'am. else is speaking. Yeah. This is Kalpana Asdavkar, and actually I've gone through both the eyes cataract has been done, like operated for that. But any advice, like, because after that also I had some laser, what is called that, some I think so, some filament something comes na. I have treated for that also, both laser treatment. Oh, but now how yes. should I take care? Because all the time I think please give some advice, sir. So basically once you've got operated for the cataract surgery, it is a permanent procedure. You don't need to do any other procedure as such. जो आपने laser किया है, that is basically just to remove a thin filament which develops behind the lens, which is quite common after a very long time. तो उसके लिए laser करके वो clear हो जाता है। Secondly, आपका कौन सा लेंस डाला है उसके हिसाब से यू माइट हैव अ स्लाइट रीडिंग नंबर एज वेल। ओके, तो आपका दूर का नंबर अगर निकल गया हो, स्टिल यू कुड हैव अ स्लाइट रीडिंग नंबर। तो उसके लिए अगर आपको चश्मा दिया है तो डेफिनेटली यूज इट फॉर डूइंग एनी एक्टिविटीज व्हिच आर हैंड हेल्ड, मोबाइल देखना हो या कुछ किताब पढ़ना हो। तो अगर वो नंबर यूज करेंगे तो आपका रीडिंग और कोई भी फाइन एक्टिविटी नजदीक का बहुत क्लियर रहेगा। अगर डिस्टेंस का आपका नंबर पूरा गया हो तो उसके लिए चश्मा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि बहुत मामूली सा नंबर रह जाता है डिस्टेंस के लिए, तो उस केस में अगर बहुत मामूली नंबर है और उसमें दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए भी नंबर यूज करने की जरूरत है। बट इफ यू हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस नंबर एंड यू फील कि बहुत ही दूर के एक्टिविटीज के लिए नॉट एबल टू सी क्लियरली, देन इट इज बेटर टू हैव अ डिस्टेंस नंबर एज वेल फॉर दैट। सेकेंडली कैसे रहता है कि आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी देयर इज जो नॉर्मली आंखों में ड्राइनेस रहती है, देयर इज इनहेरेंट ड्राइनेस आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, एंड आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर एनी प्रोसीजर ऑन द आई, द ड्राइनेस कंपोनेंट इंक्रीजेस। तो आपको अगर ड्राइनेस के लिए कुछ ड्रॉप्स दिए हैं और यू हैव बीन एडवाइज्ड बट नॉट हैवंट बीन यूजिंग इट ऑफ लेट, इट इज डेफिनेटली एडवाइजेबल टू यूज दोस ड्रॉप्स जो मैंने लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के बारे में बोला आई ड्राई आईज के लिए। अगर ड्राइनेस कंपोनेंट है तो उसके लिए ड्रॉप्स यूज करना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से जो बीच बीच में धुंधलापन होता है दैट कैन बी डिक्रीज और आपकी आंख कंफर्टेबल रहेगी। Hylosurge drops. Hylosurge. Yeah. Hylosurge, but my both eyes, like one eye is I mean long side and one eye is short side. Okay, different so numbers. so basically I think so ऑपरेशन के वक्त ही एडजस्टमेंट किया है कि आपको चश्मा यूज करना है। Adjustment किया है, right. I don't use most probably, but only when I attend the seminars and mostly seminars. Thank you, doctor. Thanks a lot. Okay. And one more thing, sir, you said that for small children due to AC, the dryness comes, right? Yeah, so it's not basically due to the AC, it's any environment wherein there is a lot of air or wind blowing. So AC के वजह से कैसे due to a draft of the air, there is a lot of dryness in the eyes. So अगर हम देखे जाए तो people who are traveling in trains or people who are traveling even in their cars for a very long time, the direct blow of the AC on their face, उसके वजह से जो tears रहते हैं वो ज्यादा evaporate हो जाते हैं। अगर blink भी ना करे बराबर से तो वो भी evaporate हो जाते हैं, and because of the direct blow of the air into the eyes, the dryness component increases. So
So it would be advisable कि अगर directly we don't sit in front of the blow of the AC, it would be better. Yeah, thank you, doctor. Thanks a lot. Any other question? Or should we close? Yes, ma'am. Yeah. So I have I have to tell, you can repeat the exercise of eyes, because my mobile is so short that I can not see that exercise. The exercise of the eyes. Yes, yes, Should I repeat them? yes. Okay, so I'll just show it in short. So basically, जो first exercise है, that is with a pen or with a thumb. Arm distance पे रखना है. Okay, so you have to bring the pen or the thumb close to you. Focus on the thumb or the pen till it becomes blurred, and then blink and take it back. ये movement कर सकते हैं या तो दो अलग पेन रखने हैं, एक arm distance पे, एक one between the eyes and the pen which is far away, and keep changing the focus from distance to near, distance to near, distance to near. That is one exercise. Another exercise is कि आंखों को 360 degrees हमें movement करना है in 9 different directions. तो ऊपर देखना है. You don't have to move the head. So the head will be in a constant position. Only the eyes have to be moved up, down, to the right, to the left, or diagonally to the top left, down left, top right, and down right. तो इसमें कैसे हो जाता है कि all the muscles which are there in the eyes are exercised. और उसके वजह से जो strain है और जो fatigue है वो कम हो जाता है. So these are very basic exercises. बाकी के exercises बहुत complicated रहते हैं, so I really cannot explain it on this forum. But ये 2-3 exercises हैं जो आप अगर follow करें तो it will be very helpful. अगर किसी को डायरेक्ट कंसल्टेशन करवाना है डॉक्टर से, तो डॉक्टर कैन यू प्लीज शेयर द नंबर इन द चैट बॉक्स? Yeah, sure, definitely. I'll just definitely share it. At that time, we can take some questions. Yeah, madam, I have a question. My name is Vivek Redkar. Dr. Sohail. Hello, everybody. Hello. I just completed my both cataracts, and during the second cataract, doctor told me to control on my diabetes. And what my question is, what exactly happens to the retina if the diabetes is not under control? Yes. So basically, thank you for the question, because diabetes is a very silent killer, as we call it. So because of diabetes, there are a lot of retina-related issues. जो हम diabetic retinopathy करके कहते हैं. तो बहुत mild cases में, what can happen due to diabetes is there are bleeding spots, or what we call as hemorrhages in the retina. Because of the bleeding spots, there is swelling. So what happens of the swelling is that there is a decrease in the vision, especially the sensitive part of the retina रहता है, the central part of the retina रहता है. If that is affected due to the bleeding and due to the fluid collection, edema के वजह से, then the vision can be decreased. And if the vision is decreased due to that, there can be further complications wherein down the line, end stage में पर्दा सरक भी सकता है. So diabetes को control करना, controlling the diabetes is the most important preventive measure. अगर diabetes control में ना हो और there are such diabetes related retina issues, तो उसके लिए अलग से treatment करने की जरूरत पड़ती है, which could be in the form of lasers or some injection, or even if it is a very worst case scenario, surgery. तो अगर diabetes control ना हो, the healing of any surgery on the eye, for example cataract surgery, is delayed. और diabetes out of control होने की वजह से infection के chances भी ज़्यादा रहते हैं. So it is definitely as advised by the doctor to control the sugar before any procedure, especially cataract surgery, is very, very important. क्योंकि एक तो healing of the eyes is very much delayed, and if the healing of the eyes is delayed, recovery will be prolonged, और उसके वजह से infection के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So diabetes per se has a lot of effects on the retina, जो पीछे का नस रहता है, and if that develops, then it needs special treatment, और उसके वजह से भी जो visual recovery है,
is not always the best. So diabetic retinopathy के बहुत सारा categories रहते हैं. I'll not go into technicalities क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझेगा नहीं. But आँख में सूजन होना, आँख में bleeding होना और बहुत end stage में आँख का पर्दा सरक भी सकता है. So these are some of the. Thank you, doctor. Thank you so much. Yes. It was a very informative and a value-added session. Thank you. Thank you. So I think we'll have to close here. It's almost 7. We have crossed 7 o'clock our time. So अगर आपको कोई भी और दूसरे queries रहेंगे, you can always contact Dr. Sohail or you can contact Parisar Asha. हमने हमारा number आपको share कर दिया है. So before we take your leave, it's a small token of gratitude from us. Shri, can you please share? Sir, Because it's all on screen, so we can't give you in person. Yeah, no issue there. sir, It was my privilege to present this session. Yeah. So thank you so much from all of us, from Parisar Asha. Thank you. The audience who had attended. Thank you, Ms. Aarati, and I thank the entire team of Parisar Asha for giving me this opportunity. And with your guidance and with your help, we were able to give some, little information and some knowledge with our kids as well as the adults and all the people who attended this session. And I hope with whatever information I have been able to dispense, people will take precautions, the kids will take precautions, everybody who has eye-related issues related to screen and who didn't know the exact reasons why as to computers or screens cause such issues can follow these tips and hopefully they will be much more careful with their eyes. Because we can't avoid the screen in today's era. Absolutely. So we have to live with a screen. So it's better that we take care of ourselves and our families. Absolutely. So thank you so much, all of you. Good night. Thank you. Stay safe and stay Thank well. you. Good night and please take care. Thank you so much.